हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट फैक्टर वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ. सी हियर the shape of the earth will be this type means it is flattened at the poles and plugged at the equator. So we all know that earth का shape कैसा होता है? It is elliptical in shape of the earth is elliptical, so it is flattened at the poles. पोल पे कैसा होता है? ये फ्लेटेंड होता है और आपका ये इक्वेटर पे इट इज योर ब्लग्ड आउट. So it is clear in our mind that radius at the equator is greater and radius at the pole is smaller, because we know the equatorial radius is about 20 kilometer longer than the polar radius of the earth. We all know the formula of G at equator. When we see G at equator, then we write E for earth. Then its formula becomes Gm upon Re whole square. This is your equation number 1. When we go at poles, then in place of E, P comes here. Nothing is difficult. Gm upon Rp square. This becomes your equation number 1 and equation number 2. When we solve these equation or we divide this equation number 1 by 2, then we got the value of Ge upon Gp means equal to Rp square upon Re square. Rp is what? Radius of at pole and radius at equator. Because we know that radius of the equator is greater as that of the radius of the pole. That's why we can write, because G is inversely proportional to the radius. When radius is greater, then value of G is lesser. So value of G is lesser at equator and value of G is greater at poles. So we can clearly say that value of G at poles is greater as that of the value of G at equator. From this variation, what is clear in our mind? In our mind it is clear that weight of the body increases as it is taken from equator to the pole. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इक्वेटर से पोल पे ले जाएंगे तो उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा. वाई वेट क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजेस. वेट इज व्हाट? W is equals to mg. When g is increases, then value of g also increases. Clear? Now second topic, variation in g with height. Height means what? We are moving from the surface of the earth up to some specific height. See, this is your earth having the radius capital R now, and this is your surface of the earth. From this surface we are moving upward up to small h height. Now let small g is the value of g at the surface and small g dash is the value of the point. Suppose it is point P. At point P, value of g is g dash at a small h height. This r plus h is combinedly known as a small r. We are taking here a small r is equals to r plus h. Now see here, we all know that acceleration due to gravity at the surface of the earth, हमने डिस्कस कर लिया अभी पहले ही. सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना होगा? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ एट हाइट एच, अब एच हाइट पे बात करेंगे. एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी डैश विल बी व्हाट? जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन, नाउ इन प्लेस ऑफ आर व्हाट कम्स? आर प्लस एच. आर प्लस एच का होल स्क्वायर. These are equation number 1 and 2. Now by dividing the equation number 2 by 1, when we divide the equation number 2 by equation number 1, what we get? G dash upon G. It is Gm upon R plus H whole square, Gm upon R square. Gm to Gm is cancel out. Then what are the remaining terms? Remaining terms are R square upon R plus H whole square. Now what we do? अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे. Common from this r plus h whole square. You all know how the common is taken from here. If you don't know, then I will explain. हम यहाँ पे h के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? r का, एंड डिवाइड करेंगे r का. देन वी गेट द कॉमन r स्क्वायर. देन here remaining terms is 1 plus h by
r whole square. R square से r square cancel out. Now we got 1 upon 1 plus h upon r का whole square. When we simplify this, then it becomes 1 plus h upon r power minus 2. This is the value of g dash upon g. What we are, हमें किसका वैल्यू चाहिए? We are required here the value of g dash. Then g dash, value of g dash is what? G dash equals to g 1 plus h upon r power minus 2. This is the value of acceleration due to gravity at small h height. Now इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे. This is the form of the binomial expansion. In mathematics we will discuss this binomial expansion. It is 1 plus x का power n, then it will equals to 1 plus nx, and so many terms are all there. Here we are neglecting the higher terms. Then what we get? G dash is equals to g 1 plus nx. In place of n here it what? Minus 2. Then 1 minus 2h upon r. Now final formula of g dash at a small h height is our this. G dash is equals to g 1 minus 2h upon r. Now इस फॉर्मूले से क्या शो होता है अपने को? व्हाट इज क्लियर? सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट व्हेन वी गो अपवर्ड, जब हम अर्थ के सरफेस से अपवर्ड पे जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस. हाउ इट डिक्रीजेस? कितना डिक्रीज होता है? परसेंटेज डिक्रीजेस वी विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला. हम जानते हैं परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है. डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई 100, देन इट बिकम्स योर 2h upon r multiply 100%. If someone asks to you decrease, absolute decrease in value of g, then it will equals to 2h upon r. आपको एब्सोल्यूट पूछता है तो 2h upon r, और परसेंटेज में पूछता है तो 2h upon r मल्टीप्लाई 100%. नाउ थर्ड टॉपिक इज व्हाट? वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ. पहले हमने अर्थ की सरफेस से अपवर्ड गए थे. नाउ we will move downward from the surface of the earth. See here, this is your earth. It is the point at the surface. तो surface पे what is the value of acceleration due to gravity? Is small c, small g. Now this is the center point of the earth. Now from the center of the earth at a small r distance, and from the surface small d distance, we are taking a point. At this point we have to find out the value of g, and it will be equals to g dash. Clear? And total d plus r will be equals to capital R. R means radius of the earth. Now same here, we know that acceleration due to gravity at the surface, we all know gm upon r square. इसका एक और फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, वो हमारे यहाँ पे यूज़ में आएगा. वाई? बिकॉज जब हम अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड जाएंगे तो देर विल बी चेंजेज इन वेरिएशन ऑफ एम में चेंजेज होगा मास में. दैट्स वाई. सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड यहाँ से जो स्मॉल डी डेप्थ पे वैल्यू नाउ बिकम्स जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई रो g. In place of r, what comes here? R minus d. Equation number 2. Now from equation number 1 and 2, divide the equation number 2 by 1. What we get? G dash upon g. Then 4/3 cancel out, pi's cancel out, rho cancel out, g cancel out. Then remaining term r minus d upon r. When we solve this further, then it becomes 1 minus d by r. From here we get the formula of g dash. Again it is equals to g 1 minus d by r. So it is the value of acceleration due to gravity at a small d depth from the surface of the earth. Now from this formula again it is clear that when we go from the surface of the earth to downward, then value of g again decreases. How it is decreases? The value of g decreases on going below the surface of the earth. So at the center of the earth, when we want to find out the value of g at the center of the earth, then at the center of the earth,
depth will be what? It should be equals to capital R. So when we put the capital R here, then R to R is cancel. 1 minus 1 is equals to 0. Then G dash will be 0. So it is clear in our mind that at the center of the earth, value of acceleration due to gravity is 0. So means we can say that value of G is minimum at the center and it is the maximum at the surface. When we go outward from the surface, then it decreases, and when we go downward from the surfaces, then it will also be decreases. Now कितना डिक्रीज होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी. एब्सोल्यूट डिक्रीज मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश. When we solve this, then we get G multiplied D by R. D is depth, R is radius of the earth. If someone asks you the fractional decrease, what ask? Fractional decrease. Then we find the value of delta G upon G. इसमें G का divide कर देंगे, then G is cancel out. Then remaining term D by R. If someone asks you the percentage decrease in G, when we go in a depth, then percentage increase in G is what? It is delta G upon G. Previous वाले में हमने किया था same as delta G upon G multiply 100%, then it will be equals to D by R multiply 100%. So these three questions should be asked to you from this topic. Now moving to the next topic, next variation. अभी हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट अप टू एच हाइट एंड सेकेंड हमने डेप्थ वाला डिस्कस कर लिया, और फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया था वो शेप में. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. वी ऑल नो दैट अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस लाइक दिस with some angular velocity. Now as the earth rotates, जैसे अर्थ रोटेट करती है, the variation in g is given by this formula. We have to remember this formula. This formula is what? G dash is equals to g minus omega square r cos square lambda. Here small g is what? It is your value of acceleration due to gravity at the surface. Omega is what? It is your speed of the earth. Capital R is what? Radius of the earth. Lambda is what? Latitude. Lambda is what? Latitude. So when earth rotates, then value of latitude changes. At poles, value of lambda is what? 90 degree. When we put 90 degree in this equation, cos square 90 is 0, then g dash will be what? G. At equator, lambda will be what? 0. lambda 0 होगा, then we put lambda is equals to 0 and then cos 0 will be what? cos 0 होता है आपका 1, तो it becomes g minus omega square r. So इक्वेटर पे g डैश का वैल्यू g minus omega square r और पोल्स पे g डैश will be equals to g. नाउ रोटेशन वाला जो है एक्सियल रोटेशन, उसी में हमारा एक और पार्ट है. इट इज़ योर weightlessness due to the rotation of the earth. When earth rotates, then how the weightlessness condition comes? Let's see here. Apparent weight of the body decreases due to the rotation of the earth. When earth rotates, then apparent weight of our bodies decreases. If omega is the angular velocity of the rotation of the earth, for which a body at the equator will becomes weightless. Then we all know this formula, g dash is equals to what? G minus omega square r cos square lambda. g dash का वैल्यू कितना होगा? 0. g omega square r cos square lambda. lambda is what? Where इक्वेटर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे lambda का वैल्यू कितना आएगा? 0. एक बार दोबारा इसको समझते हैं. इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ फॉर विच, जिसके लिए अ बॉडी एट द इक्वेटर विल बिकम्स वेटलेसनेस. तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस की कंडीशन कब आएगी? जब इसको हम ओमेगा लेंगे. तो वेटलेसनेस की कंडीशन में जी डैश को हमने क्या ले लिया? जी. इट इज जी डैश को हमने 0 ले लिया, सॉरी, एंड जी की जगह पे जी. नाउ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर इन प्लेस ऑफ लैम्डा व्हाट वी टेकन 0. व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट जी इज इक्वल्स टू
omega square r, and from here we got the value of omega. Omega is what? It is the angular velocity of the rotation of the earth. It will be equals to root over of g upon r. G is acceleration due to gravity and capital R is radius of the earth. Now due to the effect of the rotation of the earth on the value of g at the equator is maximum. Due to the effect of the rotation of the earth on the value of g at the equator is maximum. और यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने ओमेगा निकाल लिया, बिकॉज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, देन वी पुट द वैल्यू, वी गेट 2 पाई रूट ओवर ऑफ आर बाई जी. नाउ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे जी का और आर का, देन वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1.25 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड and time period is equals to 5026.5 second. When we convert it in hour, then it comes your 1.4 hour. So these are the your variation in acceleration due to gravity. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मिल सके.